Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope you all are safe at your home and also doing studies on time. So today I am going to start the new topic, that is organizational structure. So what is organizational structure? When the managers are performing organizing function, an organizational structure gets created automatically, which defines the job positions, the authority, responsibilities of different employees. Or we can say that organizational structure is a system used to define a hierarchy within organization. It identifies each job, its function, and where it reports to within the organization. So organizational structure can be defined as network of job positions, responsibilities, and authority at different levels. Different levels like top level, middle level, and lower level. So, or it can be called as a framework within which managerial and operational tasks are performed. Please underline this, it's a very important line. Again, I repeat, organizational structure can be called as a framework within which managerial and operational tasks are performed. Organizational structure is very important. It specifies the relations between people, work, and resources. In every business, organizational structure is very important and very compulsory. So, organizational structure is very important. How? Organizational structure बताता है कि एक बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की पोजीशन क्या है, उनकी ऑथोरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनका वर्क करने का तरीका क्या है, और उनके सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के रिलेशंस क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है. सो इट्स ए फ्रेमवर्क. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ लाइक ए फ्रेमवर्क जिसमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है. फर्स्ट इज़ मैनेजरल एंड सेकंड इज़ ऑपरेशनल. मैनेजरल एक्टिविटीज़ जिसमें मैनेजर सुपरवाइज करते हैं, बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट को किस अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, वो अपने जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं. एंड ऑपरेशनल में जो डेली रूटीन के टास्क है, जो डेली एम्प्लॉयज़ को वर्क करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. तो इट्स ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लुक, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट gives shape to organizational structure. But what is span of management? It's also very important question. What is span of management? Span of management or span of control, both are same. So span of management means how many employees or subordinates can be effectively managed by one manager, or how many subordinates can be effectively controlled by one superior. Again, I repeat, span of management means how many employees or subordinates can be effectively managed by one manager, or how many subordinates can be effectively controlled by one superior. When the authority and responsibility relationships are established in organizing process, then the manager must keep in mind the span of control. So span of control or span of management, both are same. So span of management, this is span of management, and that is divided into two types. First is narrow span of management, second is wide span of management. So what is the definition of narrow span of management? You can write, when many levels of managers and supervisors are controlling for less number of subordinates, that is narrow span of management. Again, I repeat, when many levels of managers and supervisors are controlling for less number of subordinates, that is narrow span of management.
लुक, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत ही प्रॉपरली वर्क करना होता है. नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक मैनेजर 2 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, 2 या 3 लोगों को, ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज करने की कैपेबिलिटी उसमें नहीं होती है. तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लुक, एक मैनेजर है, उसके अंडर 2 मैनेजर है, फिर उन 2 मैनेजर के अंडर 2 मैनेजर्स है, फिर उन 2 के अंदर 2 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं. ओके, नाउ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. This is the chart of narrow span of management and wide span of management. So what is wide span of management? By when few levels of managers and supervisors are supervising and controlling for maximum or large number of subordinates. Again I repeat, by when few levels of managers and supervisors are supervising and controlling for maximum or large number of subordinates, that is wide span of management. Look, एक मैनेजर है, उसके अंडर 50, मान लो आप लोग 50 मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं या 50 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, फिर एक उस एम्प्लॉय के अंडर या एक मैनेजर के अंडर 10-15 एम्प्लॉयज़ वर्क करें. ओके, सो दैट इज़ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में हम ये एग्जांपल लेंगे कि एक मैनेजर है, उसके अंदर 20 मैनेजर्स है या 50 मैनेजर मान लो, 20 या 50 मैनेजर्स मान लो, और उस एक मैनेजर के अंदर 10 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज द चार्ट ऑफ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. सो आफ्टर डिसाइडिंग the span is scalar chain is developed of all the superiors and subordinates, because the span of control clearly specifies who has to report to whom. Again I repeat, after deciding the span is scalar chain is developed of all the superiors and subordinates, because the span of control clearly specifies who has to report to whom. Now, importance of organizational structure. First is, structure organizes properly all the operations of business and ensure better flow of communication. बिकॉज आपने यहाँ पर पहले ही सबको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेट कर दिया है कि कौन किसका मैनेजर है, स्पेसिफिक मैनेजर कौन किसका है, किसको रिपोर्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉल्व आउट होगी. तो यहाँ पर एक बेटर फ्लो कम्युनिकेशन बन जाता है, बिकॉज स्केलर चेन यहाँ डेवलप्ड हो जाती है. So structure organizes properly all the operations of business and ensure better flow of communications. Second is, a clear structure makes it easy to check the responsibility of each part of business. सभी को अपनी responsibilities पता होती है कि किसको किस according work करना है, किसको report करना है. Third is, a clear idea about the working style of an enterprise can be known from organizational structure. Fourth is, organizational structure allows correlation and coordination among human, physical and financial resources. Physical resources means raw material, machinery and all. Fifth is, it clearly defines the level of management and span of control under each level. So, or span of management gives shape of organizational structure, number of subordinates, workers under one superior. So narrow span of management results in tight structure, whereas wide span result in flat structure. So आपको इस चार्ट से समझ आ ही गया होगा कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला है और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला है. नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Whenever the managers is performing organizing functions, it results in formation of an organizational structure, which the working style of an organization. The organizational structure can be defined as a network of job positions, responsibilities and authorities at different level organization. This structure shows the authority responsibility relationship between the people working at different job positions, and this structure makes clear who is reporting to whom.
or who is the boss and who is the subordinate. Okay, again I repeat, this structure means organizational structure shows the authority responsibility relationship between the people working at different job positions. This structure makes clear who is reporting to whom and or who is the boss and who is the subordinate. Okay, clearly define कर रहा है वो यहाँ पे organizational structure. So the organizational structure can mainly be of two types, which are first is functional structure and second is divisional structure. So functional structure, when the activities or jobs are grouped keeping in mind the function or the job, then it is called functional structure. Please underline this, when the activities or jobs are grouped keeping in mind the function or the job, then it is called functional structure. For example, all the jobs related to production are grouped into production department, like processing, quality control, repair and maintenance. And now, yes, all the jobs related to production are grouped in production department. All the jobs related to marketing are grouped in marketing department, like advertising, sales, customer service, research. And all the jobs related to finance are grouped into finance department, like capital structure, finance planning. All the jobs related to purchase are grouped in purchase department, like purchase of raw material, purchase inputs and record machinery, record of purchase, and so on. So related to sales in sales department, related to purchase in purchase department, and so on. Within the departments also grouping is done on the basis of specialized function. Even territory wise grouping is also included in functional structure, that is north, region, south, west, etc. For example, the production department can be further classified into store department, quality control department, assembly department, etc. Within each department, at sub-department, a chain of superior and subordinate needs is created to work systematically. Now, what is the advantages of functional structure? First is occupational specialization. Since in functional structure emphasis is placed on specific function, this promotes efficiency in utilization of manpower, as by performing similar jobs their performance improves and they become specialized in their task. So फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना और फंक्शन के बेसिस पे ही ग्रुप बनाना और फंक्शन के बेसिस पे ही वर्क करना. सो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे क्या बोला है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं या मैनेजर वर्क कर रहे हैं, तो वो उनको डेली एक ही टाइप का वर्क करना है. उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, उन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है. उनको ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मतलब है. प्रोडक्शन से रिलेटेड ही उन्हें वर्क करना है. रेगुलर उसी वर्क को करते करते एक एफिशिएंसी आ जाती है वर्क में और स्पेशलाइज्ड हो जाता है. तो दैट इज़ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. सेकेंड इज प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट. ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज़ ग्रुप इन वन डिपार्टमेंट देयर इज़ ईजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल. एक मैनेजर है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, वो सुपरवाइज करता है अपने वर्कर्स को. उसे पता है कि इसी तरीके से वर्क करना है, तो एक उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है अपने वर्कर्स से. एक ये डिपार्टमेंट यहाँ पे बोला है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट के अंदर उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, उसे वर्क करना होता है, उसमें पता होता है कि किसको कब रिपोर्ट करना है, क्या बात करनी है, कैसे वर्क करना है. थर्ड इज़ increases manager and operational efficiency.
जब आप रेगुलर एक ही वर्क को बार बार करोगे तो आपका वर्क करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, एंड मिनिमम कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट. Fourth is it leads to minimum duplication of effort. This results in economies of scale of lowering of cost. Fifth is easy and effective training. As training focuses only in limited skills or one function only, like marketing department. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर को सिर्फ एक ही टाइप की ट्रेनिंग देनी है, दैट इज़ रिलेटेड टू ओनली वन डिपार्टमेंट, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. मार्केटिंग की ही ट्रेनिंग देनी है कि एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, सेल्स में क्या करना है, कस्टमर सर्विस कैसे देनी है, रिसर्च कैसे करना है. तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई इंटरलिंक नहीं है, फाइनेंस नहीं है, परचेज नहीं है, सिर्फ एक ही तरीके की ट्रेनिंग देनी है और सुपरवाइज करना है. कुछ न्यू अपडेशन आता है तो वो न्यू अपडेशन आपको बताना है. तो ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग. सिक्स्थ इज ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन. Each function gets due attention under functional structure. Now, disadvantages of functional structure. First is places less importance to overall objective of organization. Functional structure places less emphasis on overall enterprise objective than the objective pursued by functional head. You all know very well कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको टारगेट दिया गया है तो आपको सिर्फ अपने टारगेट को कंप्लीट करने का रहता है कि मुझे ये मेरा टारगेट कंप्लीट करना है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना रहेगा कि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है, बट एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो डिफरेंट होता है, दैट इज़ प्रॉफिट या ग्रोथ. ओके, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग रहेगा कि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग रहेगा कि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है, फाइनेंस का अलग, परचेज का अलग. तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को थोड़ा भूल जाते हैं और वो सिर्फ अपनी वर्क पे ध्यान देते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They fail to give priority to organizational structure. They may lead to pursue departmental interest at the cost of organizational structure. Now, second is problems of coordination. As each department is specialized in their own function, so they fail to understand the priority of other department. It is very clear. Third is inflexibility. In functional structure, employees develop narrow perspective as they get training in one area or skill only. They cannot be transferred to other departments. वो कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको आपकी ट्रेनिंग देनी है, मार्केटिंग में अलग देनी है, फ्रांस में अलग, परचेज में अलग. So functional heads do not get training for top management position as they enable to gather experience in diverse areas. Fourth is conflict of interest. There can be conflict of interest between different departments. Example, sale department insists on giving discount to interest sale. Finance department puts objection as it will reduce the revenue. सबका अपना रहता है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट का टारगेट को कंप्लीट करना है, मुझे अपना वर्क अच्छा शो करना है. सो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे. फिफ्थ इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. Accountability in case of failure of organizational objective, the departmental head blames other department as all departments are interrelated. सब यहाँ पर क्या है, interrelated है. बिकॉज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब परचेज नहीं करोगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केटिंग कैसे होगी, बिकॉज किसी प्रोडक्ट की तो मार्केटिंग करेंगे आप, प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल भी नहीं होगी. वही दैट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग नहीं हुई तो आपके पास में पैसा नहीं आएगा. So, in case of failure of organizational objective, the department head blames other department as all departments are interrelated and it is very difficult to find out which department is going against the organizational goal. Example, the sales department may blame production for poor quality. Production output may pass blame on purchase for low quality raw materials purchase made due to less finance given by finance department, and so on. Now, suitability.
So functional structure are suitable for first division of work as per function, जहाँ पे function के according सिर्फ specialization in every function, grouping of similar nature of jobs. Fourth is uniproduct or single or one type of product manufacturing company. That is very important. Please underline this. Uniproduct or single or one type of product manufacturing company. It is very important for functional structure, is very important for single or one type of product manufacturing company. Now divisional structure. So we will discuss about divisional structure in next video. So thank you. Have a nice day to all.